आगाज है ये, क्या आगाज है ये? पूरा का पूरा जनता साथ में है, हर एक के इसमें अलग अलग कार्ड्स है, हर एक बार बोल रहे हैं कि 302 होनी चाहिए। सुशांत का मर्डर है, वो 302 की ही धारा लगनी चाहिए, कल्प्रिट्स को फांसी लगनी चाहिए, सबको फांसी लगनी चाहिए, कल्प्रिट्स को फांसी ही होनी चाहिए। 302 यही लग रहा है। सुशांत को न्याय चाहिए, न्याय। तो देखिए नारे लग रहे हैं यहाँ पर सुशांत के न्याय के लिए, और ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कोलकाता से दिखाई दे रही हैं। आपने ऐसी तस्वीरें पटना से, वाराणसी से भी देखी थी, दिल्ली से देखी थी, उसके पहले मुंबई में लंबा संघर्ष चला था, और आज कोलकाता के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं न्याय की मांग को लेकर के। ये रोड मार्च चल रहा है और न्याय की मांग के साथ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। इंसाफ की ये जंग रुकने वाली नहीं है जब तक सुशांत जी को न्याय नहीं मिल जाता। कोलकाता की सड़कों पर जो आप जोश और जुनून देख रहे हैं, ये सुशांत जी को न्याय दिलाने के लिए है। पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं, और आज नवरात्र के पहले दिन काली माँ का आशीर्वाद लेकर हमने फिर से लोगों को एक साथ एकत्र किया है, और उन्हें भरोसा दिलाया है कि ये न्याय की जंग हम जीत कर रहेंगे। न्याय की जंग जीत कर रहेंगे, यही आवाज यहाँ रोड शो में हर किसी की है। देखिए और भी लोगों से मैं बात करती हूँ। स्मिता पारिक जी मेरे साथ है। स्मिता जी, न्याय की जंग जीत कर रहेंगे, यही उम्मीद 4 महीने पहले इसी उम्मीद के साथ जो कारवां आगे बढ़ा था, आज देखिए किस मुकाम पर आप पहुंचा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्कुल कह दिया था ना, छेड़ दिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। बताइए मैम। हम लोग सब कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी जब तक रहेगा हमारा लड़ाई तब तक चलेगा। हम सब अर्णब गोस्वामी के साथ हैं, हम लोग सब ग्रेट जॉब अर्णब गोस्वामी। हम आपके लिए दुआ मांगते हैं। मैम आनंदिता जी यहाँ पर जर्नलिस्ट है, कोलकाता में हमेशा आवाज उठाती रही है, आज सुशांत के लिए भी मुहिम में सामने आई। आनंदिता जी, हम सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, कोई सियासी मत करना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सियासी मत करना। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं, हम लोग जाति धर्म सब कुछ भूल करके हम लोग सिर्फ जस्टिस फॉर SSR, सेफ्टी सिक्योरिटी रेस्पेक्ट, जस्टिस फॉर SSR, सुशांत सिंह राजपूत, सेफ्टी सिक्योरिटी रेस्पेक्ट, बॉलीवुड क्लीन करो, बॉलीवुड क्लीन करो। तो जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर SSR, बस यही नारा यहाँ पर लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पोस्टर्स, बैनर, और इसमें देखिए आप सुशांत की तस्वीर बनी हुई है। सुशांत के अलावा यहाँ पर दिशा की तस्वीर बनी हुई है, और जिया की भी तस्वीर बनी हुई है। जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की पोस्टर्स को हाथ में लेकर के ये लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, हैंग द कल्प्रिट्स, सत्यमेव जयते, जस्टिस विल प्रिवेल, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। टी शर्ट इन्होंने पहनी हुई है जस्टिस फॉर सुशांत की, मास्क लगाया हुआ। एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव कैंपेन है ये, जो कोलकाता की सड़कों पर आज नजर आ रहा है। और आप जिससे भी बात करेंगे वो क्या कहता है, आप खुद सुनिए, बोलिए। हाँ, सुशांत को न्याय चाहिए, जितना जल्दी हो सके 302 चाहिए। सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। We want justice for SSR, justice for SSR, justice for SSR, justice for justice for justice. We want 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 justice. Justice. We want justice. CBI We want justice. We want। बहुत वक्त बाद कोलकाता की सड़कों पर इस तरह का प्रोटेस्ट और इस तरह के जोश के साथ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बोलिए आप। मैं चाहती हूँ कि सुशांत को न्याय मिले, जस्टिस मिले। बहुत हो गया, अब जस्टिस मिलना ही चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं रवि जी, और वो चाहते हैं कि सच्चाई छुप जाए, दबाव डाल रहे हैं। सच्चाई छुपने वाली नहीं है, और जितने लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन हो गया है, और सारी सच्चाई देश के सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा, और हत्यारे पकड़े जाएंगे। हमारी ये मांग है कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। यही यहाँ पर हर कोई कह रहा है। मयंक मेरे साथ है। मयंक, जो लोग सच छुपाना चाहते हैं वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? एकदम डरपोक लोग हैं और कुछ नहीं करना चाहते वो लोग। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके पास कम टाइम है, अगर आप इतना ही सच्चाई मतलब सुशांत के लिए पेश करना चाहते हो तो आप कर दो, वरना आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। बुरा हाल होने वाला है। जो लोग सच्चाई
नहीं छुपाना चाहते गणेश उनका? बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है। ये आगाज हर शहर, हर गली, हर देश में चलेगा। जब ये हर जगह से चलेगा ना, तो हम हर जगह घूमेंगे। रिपब्लिक टीवी हमारे साथ है, और जब हर जगह चलेगा तो बराबर इंसाफ करना ही पड़ेगा। देश की जनता का साथ नहीं देंगे तो और किसका देंगे? देश को इंसाफ करना ही पड़ेगा। ये जो मांग उठ रही है, ये सोचिए सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग एक पल के लिए भी ठहर नहीं रहे हैं। एक पल के लिए भी लोग ठहर नहीं रहे हैं। देखिए, और ये देखिए, ये जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको सबका जस्टिस फॉर एसएसआर, दिशा एंड जिया, कोई नहीं बचेगा अभी इधर से। हम लोग कभी अपना मुहिम नहीं बंद करेंगे जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दिशा को न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए बड़ी खबर, ये रोड मार्च जारी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। और सुब्रमण्यम Well, that is Shweta getting us a live update from Kolkata, even as the Justice March continues for Sushant Singh Rajput. But there has been another update. After the crucial meeting with the Parliamentary Panel on Health, Dr. Subramanian Swamy has made stunning disclosures in the SSR case. The BJP leader has questioned the AIMS Dr. Sudhir Gupta and has alleged underworld link in the case. From the streets of Patna to Jantar Mantar to the ghats of Varanasi. For the last 125 days, there has been one roaring demand: justice for SSR. And BJP's MP Dr. Subramaniam Swamy has now ensured that this demand echoes in the parliament. After a crucial meeting with the parliamentary panel on health, Dr. Swamy has made some stunning disclosures. I still not been finished my tasks there because I wanted the NIA also to come in, because there's no doubt that the Dawood gang is involved. I think no murder can take place of this kind without these gangsters' involvement. And the focus of the parliamentary panel meeting was Dr. Sudhir Gupta's leaked report that allegedly pushed the suicide theory. BJP MP Dr. Subramaniam Swamy personally met Dr. Sudhir Gupta, and he has examined the AIMS panel report that has been submitted to the CBI. And ultimately it turned out that Dr. Gupta did not go to Bombay at all. His other three members went, and then they produced a report in which they did say that it appears to be a case of suicide on the basis of evidence available. Dr. Gupta, without having gone himself, without having talked to the doctors as a fellow doctor, he on the basis of those three people's report, he backed it. The lack of fulfillment of certain minimum conditions like video and so on and so forth. But he concluded that it was suicide. Now, naturally, there was consternation. The CBI immediately said our investigations continue, because CBI is not bound by an autopsy report. It is not an autopsy report. It's a review of the autopsy report or the postmortem of the Dr. Cooper Hospital. And they did not have the benefit of the body, because he was cremated very next day, early next morning. Night they complete the examination, and the morning he is cremated. So there's no body for them to examine. So what they're doing is just whatever data is presented by these doctors to say. And I think the proper conclusion, according to me as a layman, but who has dealt with these kinds of cases in his public life, he should have said it's inconclusive. We are not able to conclude what it is. It could be suicide, it could be murder, etc., and left it to the CBI to go for circumstantial evidence. And CBI is getting a hell of a lot of circumstantial evidence. And he shreds apart the report by pointing at the lapses and the erroneous judgment. Late in the night, I mean around 9 o'clock or thereabouts, they took it by ambulance to Dr. Cooper's hospital, which is 11 kilometers away, whereas Lilavati hospital is just next door. But they didn't go there. They took it there, and they said, no, this is a government hospital. And they did the autopsy
This is now recorded by Dr. Sudhir Gupta's committee in his report. They did it in the midnight, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, and in very poor lighting. That's also recorded, very poor lighting. And they didn't bother to do a video of that. And they concluded that he died of asphyxiation. But someone came along and said, don't say just asphyxiation, say also by hanging. So there were some big marks which were not explained. And all this happened. And then by then, whatever was in the stomach would have gone down the intestines. And there are a few things which were discovered which have not been explained. There was a lot of sperm on his pajamas. How did that come? Was some female there and he was having sex with her? What? Nothing investigated. And the report concluded, and there are about 11 violation of procedure. For instance, it's required in an autopsy to estimate the time of death, and they did not put that in at all, which is very extraordinary. Dr. Gupta met Dr. Swamy face to face and was forced to answer Dr. Swamy's questions. Dr. Gupta would have sent a copy to the ministries or the AIMS medical board, and then also one copy to the health secretary. But Dr. Gupta, who was then directed by the health ministry secretary to come to a meeting with me at a place mutually decided, which was my house, and then answer my questions, because I had already sent the questions in advance in a letter. And he came and I quizzed him, and he was firm on the question of suicide, but he was unable to answer why he did not, why he just was dismissive of all these irregularities in the conduct of the post-mortem. And taking the fight further, Dr. Subramaniam Swamy has approached the centre with a demand on further course of action. So I have written them another letter saying that this report now should be, and I've also spoken to to people in the department headed by my friend and colleague Jitendra Singh, who is the Minister of State, which supervises the CBI, not for its criminal investigations, but in terms of its pay and its facilitation funds and so on. And I've spoken to him also in saying that this matter should go now to the medical board of the All India Medical Institute. Meanwhile, the CBI, the Enforcement Directorate, and the Narcotics Bureau Board, they all must give, based on the circumstantial evidence or the evidence they have collected, their prima facie case so that a charge sheet can be filed. With the fight now reaching the central government, are we closer to the Sushant investigation truth? Bureau Report, Republic TV.